कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, इस पर हम करेंगे बात। कंजर्वेटिज्म एज ए फिलॉसफी डेडिकेटेड टू डिफेंस। कंजर्वेटिज्म क्या है, जो लिबरलिज्म के अगेंस्ट है, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बहुत कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशनल्स होते हैं, और ट्रेडिशनल्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे डिफेंसिव स्ट्रेटजी, मेंटेन टू प्रेजेंट एंड other area. The term of conservatism has the meaning of may refer to the person moderate of thought, behavior, lifestyle, conventions, even conflict, fear of reversal change. Conservatism of ideology is the opposes more than the favor. वो हमेशा अपने फेवर में बात करेंगे, ठीक है, अपनी सारी चीजों की तारीफ करेंगे और अपने फेवर में सारी बात करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब आता है एंड्रयू हेवुड। एंड्रयू हेवुड क्या बोलते हैं, एंड्रयू हेवुड ने कहा कि ट्रूथ इज देयर, कंजर्वेटिव हैड द क्लियर समथिंग व्हाट इज द अपोज देन द फेवर। भले ही उनकी चीजें अपने वो अच्छी ना हो, फिर भी उसी के फेवर में बोलेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आता है कि कंजर्वेटिज्म के कुछ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है, जिसमें किल्टन रोस्टर क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल विद द ब्लूप्रिंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, थ्री प्रिंसिपल्स कंजर्वेटिज्म का होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कंजर्वेटिज्म का, उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल मोर ऑर्डर, more order sanctioned and supported by organized religions। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू की तारीफ करेंगे, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम रिलीजन की तारीफ करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कंजर्वेटिज्म है। दूसरी बात, obstinately affect nature, meaning which unreason sinfulness always behind the certain of civilized behavior। लेकिन हर पर्सन को एक सिविलाइज्ड बिहेवियर सोसाइटी में करना होता है। विदाउट सिविलाइज्ड बिहेवियर आदमी कैसे आगे बढ़ेगा। द न्यूट्रल इनइक्वालिटी ऑफ मेन एंड मोस्ट क्वांटिटीज ऑफ माइंड, बॉडी एंड कैरेक्टर। हर पर्सन का अपना दिमाग है, अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है, अपना आइडिया है, वो उसका इस्तेमाल करता रहता है टाइम टू टाइम। एवरी पर्सन अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना आइडिया, तो उसका वो इस्तेमाल करेगा। द नेसेसिटी ऑफ सोशल क्लासेस एंड ऑर्डर, और वो सोशल क्लास एंड ऑर्डर को भी फेवर करेगा। एंड द कॉन्सिक्वेंट अटेन आर लिविंग बाय द फोर्स ऑफ लॉ, और हमेशा वो हर चीज को एक कंक्लूजन्स के तौर पर देखेगा और फोर्स ऑफ लॉ की तरह उसे देखेगा। द प्राइमरी रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द परस्यूट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड द डिफेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। हर चीज की अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और उसके फेवर में वो बात करता है। द नीड टू रूलिंग ऑफ सर्विंग अरिस्टोक्रेसी, तो इसको भी हम एक अरिस्टोक्रेसी की भी बात कर सकते हैं। द लिमिटेड सर्च ऑफ ह्यूमन रीजन एंड द कंस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन। हम कुछ भी करें तो ट्रेडिशनल है तो उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, उसी इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। रिचुअल एंड इवन प्रेजुडियस, और हमेशा रिचुअलिटी की बात करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, इस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, द feasibility of potential tendency majority rules and the conquest desirability diffusing limited and balancing political power। हर किसी को अपना पावर चाहिए, कंट्री के बारे में बोलेगा, वहां से कुछ पावर अर्न करेगा और हमेशा अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बताएगा, दूसरे राष्ट्र की आलोचना करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब एवरी ऑल चीजें जो है अपने फेवर में बताना, अपने फेवर में उसे एक्सप्लेन करना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। रसेल क्रिक व्यू इन कंजर्वेटिज्म, रसेल क्रिक द एशियंस कंजर्वेटिज्म is the perception of the ancient moral tradition of humanity and that the conservatism, customs, conventions, constitution, perceptions and the root of tolerable civil order and the root of tolerable and civil order. This is the concept of conservatism. This is the concept of conservatism. Russell Crick lists the canon of conservatism thought. रसेल्स क्या बोलते हैं इसके बारे में वो आप देखो। रसेल कहता है ये बिलीव इन बॉडी ऑफ नेचुरल लॉ व्हिच रूल सोसाइटी एंड conscience
बॉडी लॉ नेचुरल एंड रूल ऑफ सोसाइटी, ये कहते हैं वो कंजर्वेटिज्म को, रूल ऑफ सोसाइटी को। दूसरा पॉइंट का, ये लव ऑफ वैरायटी, मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज अपोज ए नैरोइंग यूनिफॉर्मिटी, एग्लिटरियनिज्म एंड यूटिलिटरियनिज्म, ये दोनों उसका एक पार्ट हो जाता है, यूटिलिटरिज्म एंड एग्लिटरियनिज्म। नेक्स्ट, ultimate equality to judgment of God and equality before court of law and recognized by conservative, but equality of condition means equality in serving of broadum, जिसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज conservatives of law. It is a faith of perceptions and custom, convention and old perception, in the check upon anarchy and men, lust of power. This is the concept of conservatism. This is the concept of conservatism. Society must after the prevent change, which is the means of self-preservation. Self, but statement must take providence into the calculation, and the statement chief virtue, according to Plato, Brooke, in prudence, in the concept of conservatism. ये सारे उससे related है. Next, conservatism is the philosophy of individual, of an autonomous individual with enhanced rights, of an individual rooted in strong moral values of the individual, natural and traditions. ये सारा क्या होगा, कंजर्वेटिज्म का पार्ट होगा। नेक्स्ट, एडमंड ब्रूके, व्यूज ऑफ कंजर्वेटिज्म। एडमंड ब्रूके, एडमंड एडमंड ब्रूके, एडमंड ब्रूके, एडमंड ब्रूके, व्यू ऑफ कंजर्वेटिज्म। एडमंड ब्रूके, द व्यू ऑफ कंजर्वेटिज्म, व्यू ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये क्या बोलते हैं, एडमंड ब्रूके। एडमंड ब्रूके ने कहा क्या, द डिजायर ऑफ कंजर्वेटिव, द वर्ड ऑफ एडमंड ब्रूके, द अंडरलाइंग थीम ऑफ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, though it is not sole objective, is conservative of all side of seek to attain. Edmund Burke presented his view on the French Revolution in the work Reflections on the Revolutions of France. Reflection on the Revolution of France. This work created the foundations of modern conservatism. View faith in the past, his administration of present, his opposition in innovation, his small view of human nature, his belief in traditions, outlook of society, and his sympathies with men of property. All these make him conservatism thinker. ब्रूके कंजर्वेटिज्म इज द बेसिस ऑफ ऑल हिज राइटिंग। ब्रूके कहता है कंजर्वेटिज्म जो है वो एक राइटिंग की तरह है, स्किल्स है, उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, राइटिंग एंड स्किल्स होती हैं। पहला होता है स्टेटस क्वो, it is the one which things kept as they are in every society, and find people who are interested to keep things as they stand and who would not like to bring changes far in status quo. They have nothing to lose. हर चीज का अपना एक एम होता है, अपनी एक नीड ऑफ डिजायरमेंट होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम उन चीजों को लेकर के आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंजर्वेटिज्म, द इंटरेस्ट ऑफ कीपिंग things in status automatically give people the way and still promote and defend them. They have still promote and defend them. These people create organization or institution for ensuring the conservation of things. तो ये थ्री टाइप्स का होता है, स्टेटस को, ऑर्गेनाइजेशनल कंजर्वेटिज्म एंड फिलोसॉफिकल। पहला तो है स्टेटस, स्टेटस कंजर्वेटिज्म, स्टेटस को नंबर एक। नंबर दो होगा, नंबर दो जो इन्होंने उसमें बताया ऑर्गेनाइजेशनल कंजर्वेटिव, ऑर्गेनाइजेशनल नंबर टू हो जाएगा। नंबर थ्री है क्लासिकल कंजर्वेटिव, क्लासिकल क्लासिकल कंजर्वेटिज्म।
ये थर्ड पॉइंट होगा क्लासिकल कंजर्वेटिव। क्लासिकल कंजर्वेटिव द philosophy is the build of case or the protection of promotion of interest। philosophy में भी वो कंजर्वेटिव होते हैं, धर्म में भी होते हैं, रिलीजन में भी होते हैं, तो हर जगह अपनी ही आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। जो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करे, दिस इज द कंजर्वेटिज्म, वो कंजर्वेटिज्म है। मिचेल ओके पास व्यू ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब ये तो हो गया हमारा तीनों पॉइंट्स कि स्टेट व्यू होगा, ऑर्गेनाइजेशनल कंजर्वेटिज्म, क्लासिकल कंजर्वेटिज्म, कोई एलिमेंट्स ब्रोके का व्यू हो गया। नेक्स्ट व्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है मिचेल ऑक्सफोर्ड व्यू ऑफ कंजर्वेटिज्म। मिचेल मिचेल ऑक्सफोर्ड कंजर्वेटिज्म, इसमें जो कोई क्या है, Mitchell Oxford propagated to the concept of traditions. Under this theory of conservatism, this view of conservatism in the politics, moral and life are basically derived from critique and rationalism. According to the Oxford, the ideology style of politics, the rationalist style, a confused style for ideology in the rationalist scheme, as they think of merely enlargement and the index. Oxford suggested that the only style of activity we should adopt must traditional in the nature. Traditional in nature, he emphasized that every new political activity springs out from existing tradition, and hence it is just an amendment of the existing system and its implied version. All activities are him, therefore in tradition in nature. Oxford described every idea, even the most revolutionary, is tradition, always an index. An appraisement of traditional manner of attending to the arrangement of society. Oxford feels tradition is not the fixed manner doing things, but is hollow of sympathy. Every political activity, there is consequential activity for him, pursuit of intimatism, and he the foundry of all of it. Oxford claimed that traditional style of politics is the only legitimate style of politics. In his essay on the being of conservatism, he emphasized that being conservative is to prefer and familiar to unknown, the tried to the untried, fact of mystery, the actual to the possible, near to the distinct, the convenient to the perfect, and present laughter to the utopian wills. Oxford is the suspicious of both changes and innovation. Therefore, like people, twice of claim are moved by changing. This is the part of conservatism. अब आता है टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। कितने टाइप्स का कंजर्वेटिज्म होता है? टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो पहला क्या होगा? पहला है टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म। फर्स्ट होगा टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म, ये होगा ना। दूसरा क्या होगा? सेकंड सेकंड होगा सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म। सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म। तीसरा होगा थर्ड पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म, तो यहाँ पे आया क्या? टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म, सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म एंड पॉलिटिकल
conservatism. So three types of conservatism. अब इसमें आता है temperamental conservatism. Conservatism denotes the culture, determined a position, realistic, dislocating, changing customary pattern of living of working. According to Roster, conservatism is effective temperament of psychological distance of cluster of trained and display daily of most men in our society. Roster writes, one must origin high value of observatism, temperament in the pattern and social survival, even of social progress. वो अपनी सोशल प्रोग्रेस के लिए अपनी आइडियोलॉजी सोसाइटी में आगे बढ़ाते हैं. दिस इज द टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म. सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म क्या होता है? इट कैन बी डिस्क्राइब एटीट्यूड अपोजिंग डिस्क्राइब इन चेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और कल्चर ऑर्डर. लीगल, religious, political, or culture order. Situational conservation, according to Webster, is some of less partly a principle produced that are daily displayed by many men develop of society. Many men of develop of society. Situational conservatism is a not defined only well-to-do, extend to all level of people who lament change in the status of quo, status of truth. Political conservatism. It is based on universal approach of organized society and support and define the existence of present society. Conservatism is not a reactive Western. Determining factor of conservatism. Conservatism को determining factor कौन-कौन से होते हैं? जो determine करते हैं conservatism. Determining factor of conservatism. Determine factor of conservatism. Conservatism के determine factor कौन से होते हैं? First factor history and traditions. ये first. Second factor conservatism का होता है human imperfections. Second होगा human imperfections. Imperfection. Third क्या होगा? Third होगा religion and morality. ये थर्ड है religion and morality. तो आता है the role of history addition to the type of conservation. History is nothing but experience. It is deducted. Thought is matter of human relationship and legitimacy is the work of history. Manheim writes to see things author technically conservatism to the experience event in the past. Through history and experience not linear chronological fashion, but is the persist of structure, communities, habit, prejudice, persisting conservatism, emphasis. This has been shown by Burke, Rauch, Oxford, and Berrigian. Social reality can be understood through a historical approach that we cannot know where we are much less who we going until know where we have been until know where we have. That is the bedrock positions of conservatism philosophy of history. Position of conservatism philosophy of history. Human imperfection, prejudice and reason. The conservatism believes that the human beings are different creatures according to them. Humans always fear about being isolated and concerned about instability. Hence, they always seek safety, security. What is the familiar? They are always ready to sacrifice liberty for maintenance of social order and stability. Social order and stability. The people as conservatism would say are
suspicious of abstract. Idea is preferred to ground their idea is experience and reality. They have usually an already framed view, evolved from past, prejudice-made framework. The conservatism has the opinion that imported knowledge lead to abstract knowledge, and for human brain is too complicated to fully grasp in learned. Knowledge is rooted in experience and is limited to the doing of something, to the learning of something. Through committing mistake, religions and morality, conservatism is a twist different from other ideology in its approach toward religions and morality. Irrespective of dominations, all the conservatism include Hegel, Haller, Florence, made religions their morality, is keynote of state and society. The conservatism support for religious morality rest on the well-founded belief that once human beings get a drift from orthodoxy, they are likely to suffer some measure of derailment or loss of equilibrium. Religious is spiritual phenomenon. For the conservatism, there exists a close relationship between religion and conservatism as religious provide a society and moral and fabric. This is end of the class complete in the conservatism. ठीक है next class next till 12